डॉक्टर कनिमोजी जी, माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर। Thank you, sir. So the minister has answered stating the various state commissions and what are the activities conducted, like power walk, setting up legal clinic. Since the crime against women is increasing, especially the cyber crimes, originate from any part of the country, I would like to know from the Honorable Minister whether the Union Government has any plans to create digital access to National Women Commission with all the state women commissions to combat cases with jurisdiction issues as well as to provide adequate police support and coordination. As a member of the Standing Committee of Women Empowerment, I would like to put forth this to the Honorable Minister. Thank you. As we all become victims of it. Thank you. Commission, sir, on behalf of my MOS, I would like to answer to the Honourable Member. I think the suggestion is well taken. However, there is substantial coordination not only between ministries and commissions, but also particularly between the MHA and, since law and order is a state subject, with the police authorities and state governments as such. How we prioritize security and safety of women can also, sir, be highlighted by the fact that the Nirbhaya Fund we have in this ministry, in coordination with various ministries of Government of India and state governments, looked at proposals worth 9,000 crores. And depending on the needs of the state to ensure better protection of women and children, and particularly young girls, projects have been sanctioned. In fact, in this year itself, I have responded to this very august House that projects worth 4,000 crores have been sanctioned. So not only the Commission, but also the government at the centre, and I'm surely at the state, prioritize safety and security of women. Thank you. Second supplementary, madam. So people get married from one state to the other state, and there has been harassments for the women. For example, if a woman in Karnataka or Tamil Nadu get married and goes to a north side, the police jurisdiction comes under the Madhya Pradesh or Maharashtra, wherever the girl goes. And the jurisdiction changes, so the law cannot be enforced over there. Digitalization would be much better if across India it has happened. Anywhere you give a complaint, it could be taken up for the cyber crimes, sir. Thank you. So suggestion, please. Yes, sir. I think. Suggestion is well taken, sir, but since I'm not the chairperson of the NCW, I cannot act upon it. But surely, sir, I will ensure that this suggestion is conveyed to the chairperson. Mahua Majhi ji. Thank you, Honorable Chairperson, sir. मैं इस पर एक सवाल करना चाहूँगी। मैं झारखंड विमेन कमीशन की चेयरपर्सन रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि नेशनल विमेन कमीशन के कॉन्फ्रेंसेस में मैं जब जाती थी, तो पूरे देश में जितने भी विमेन कमीशंस हैं, सबके यहाँ अलग अलग तरह की फैसिलिटी है। कहीं पर स्टाफ नहीं है, कभी एक ही कमरे में वो चल रहा है, कहीं पर जैसे नेशनल विमेन कमीशन जो फंड अलोकेट करती है उन्हें देती है, तो उसके पास स्टाफ नहीं होते हैं कि वो प्रोग्राम अरेंज करे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप सभी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के विमेन कमीशन में मिनिमम फैसिलिटी एक जैसा दे, ताकि वहाँ पे जो प्रोग्राम्स करना वो चाहते हैं या नेशनल विमेन कमीशन जो फंड देती है धन्यवाद, वो उसको सही ढंग से धन्यवाद। विदित होगा कि ये स्टेट कमीशन का जो फंक्शनिंग है वो प्रदेश की सरकार के अधीन है, इसलिए आपने जो चिंता व्यक्त की है निश्चित रूप से आपके प्रदेश की सरकार भी इसे सुन रही होगी, और अगर ना सुन पाए तो आपकी ये व्यथा मैं प्रदेश सरकार को निश्चित पहुंचाऊंगी। डॉक्टर फौजिया खान जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. I would like to ask the Minister through you, the Atmanirbhar Bharat campaign has shown the link between the ability of the women of the nation and the development of the country. This change is visible when 70% beneficiaries of Pradhan Mantri Mudra Yojana are seen in this country. Also, the self-help group, sir, has expanded very visibly, and many startups have been, coming up by women. So I would like to ask the Minister that since the woman's role is continuously expanding, are you thinking of expanding the scope of the National Women's Commission also? Grateful that the Honourable Member does acknowledge the work done by the Government of India under the leadership of Prime Minister Modi, especially with enhancing capacities and potential of women of our country. Yes, I will enunciate and add to what she has said. Not only in Mudra Yojana, but also when you see Stand Up India,
where women are not looking at only SME sector, but also wanting to partake in mid-sized companies and lead them. We see that 80% beneficiaries are women. Particularly the skill development program, or my compliments to the Prime Minister for the National Education Policy, which for the first time has a gender inclusion fund. Now, insofar as enhancing the scope of the Commission, I can only say this, sir. The skill needs and the entrepreneurial needs of women in our country is a subject in which I have seen the Commission function during conferences, or for that matter, doing special workshops, including workshops in which state commissions are invited. रजनी पाटिल जी। चाहती हूँ कि यूपी के कार्यकाल में सेक्स अब्यूज एट वर्क प्लेस ये कानून पास हुआ था, फिर भी आज के तारीख में जब हम देखते हैं कि वास्तविकता ये है कि अब्यूज होता है, घर में भी होता है और बाहर भी होता है, उसके लिए मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहती हूँ कि उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं? धन्यवाद। My particular privilege that when I was a member of the opposition, Sexual Harassment at Workplace Bill 2013 was discussed in this House, and I participated in that debate. Hence, I can only say this, कि जो माननीय सांसद महोदया ने 2-3 विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि घर में घरेलू हिंसा से कैसे जूझें, दूसरा जो काम पर हिंसा है अथवा महिला का जिस प्रकार से वहाँ पर काम में गतिरोध लाने के लिए किसी न किसी वायलेंट मेजर का इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 छंदों में इसका जवाब देना चाहूँगी संक्षेप में। एक, लेबर मिनिस्ट्री के साथ सतत हमारा प्रयास रहता है कि लेबर कोड में वर्तमान में महिला काम के स्थल पर सुरक्षित हो, ये आप लेबर कोड में भी इसे विस्तृत रूप से देख सकती हैं। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर विमेन हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, हम मंत्रालय के माध्यम से न सिर्फ कमीशन बल्कि साथ ही प्रदेश की सरकारों के साथ मात्र महिला बाल विकास मंत्रालय नहीं बल्कि प्रदेश की अन्य इकाइयों के साथ भी सतत संवाद रखते हैं। कई बार महिलाएं ग्रीवियंसेस डायरेक्टली हमारे मंत्रालय तक पहुंचाती हैं, उन ग्रीवियंसेस को लेकर भी हम प्रदेश सरकार के साथ न सिर्फ संवाद करते हैं बल्कि जब तक महिला को न्यायपूर्णता ना मिल जाए तब तक हम ये संवाद महिला के साथ और प्रदेश की सरकारों के साथ जारी रखते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 186, माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू माननीय उपसभापति महोदय जी। मेरा माननीय- क्वेश्चन नंबर 186। माननीय मंत्री जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय शक्ति सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिए से एक तो रक्षण चाहता हूं हमारे अधिकारों का, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं ओरल में तो ठीक जवाब नहीं मिलता, पर रिटर्न में मेरा मंशा था, इस सवाल के पीछे जो इंटेंशन था ये था। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।